Very good. So when I say können Sie das Bildschirm sehen, that means this. Können Sie das Bildschirm sehen? Können Sie das bitte konfirmieren? Können Sie antworten mich? Can you confirm that, please? One more time. Okay, I think it's a bit, yes, that's very good. So let's do that in German, just to give you an evidence. So, mein Name ist Alvin, ich heiße Alvin, ich komme aus Pakistan und ich wohne in Karachi, genau gesagt in Clifton. Ich bin ein Lehrer von Beruf, ich bin 33 Jahre alt, ich spreche Urdu, Englisch und ein bisschen Deutsch und ich bin hier für Sie, ich möchte Ihnen helfen. Könnten Sie das verstehen? Yes, ja oder nein? So, were you able to understand that? Yeah, okay, that's very good. That's very good. So let me just help you out with that, just a bit clarity. And what I said is, mein Name ist Alvin und ich bin dein Lehrer. Ich komme aus Pakistan und wohne ich in Karachi, genau gesagt in Clifton. Ich bin ein Lehrer von Beruf und ich spreche Urdu, das ist meine Muttersprache, Urdu, Englisch und Deutsch, das ist German. Ich bin 35 Jahre alt. Okay. Und dieses Information ist sehr wichtig. Information ist sehr wichtig. Meine Handynummer ist, I want you to write this down, 0. Could you please write it down? 0 3 6 8 0 6 3 4 5 5. So let's just do a little bit of exercise here. Yeah. Yes, we will come back to the English. I want you to note down the number, please. I want you to note down the number, and then we will begin. We will just begin right after that we'll talk about that. Yeah, we begin and we anfangen. Yes, it's 0336 806. Yeah, 806 3455. Note it down and then we'll begin. And if you have noted it down, write it down in the comment section so that I can confirm that you have actually noted down the correct number. And until then, we are getting rid of all of that. So if you have noted it correctly, the number was 0336
8063455. Yes, 8063455. Thank you very much. You did that absolutely brilliantly. Now let's begin by talking about this. You have an exam that is coming up, and we need to talk about firstly the syllabus. I have been given the charge of your 20 marks which are related to English in this stage, and then I will be dealing with your group discussion part as well. Because I will be handling the communication, the presentation process there, so on. So English is about 20 marks, 20 MCQs here, which makes it like 20% of the whole course. And what we need to do is that we need to find out that what actually is going to be examined, what are they going to talk about. Should I continue in English, or should we do that in a bilingual manner? Just the last question and then we begin with this. Talk to me, guys. Okay, so okay, all right, let's go bilingual. Okay, so I want you to read from here. Lastly, the examination portion of mathematics, logic and English gauges the skill of the candidates with the benchmark skills required for the admission into graduate level studies. Mathematical section will test the knowledge of fundamental mathematics and will be in line with the curriculum of SAT and GMT. So what we are going for is actually this paper. This is the pattern that they have announced in the last exams. So logical sections will assess the general competence, critical reasoning and thought process of the candidate. English session, this is like the most important part for us right now. English section will be based on SAT GMAT pattern and will assess the grammatical. Note this down, guys. Grammatical and vocabulary knowledge of the candidate. So what examiner has specifically told you, उन्होंने लिख के बता दिया कि आपको हम चेक करेंगे SAT के हिसाब से. We'll be like assessing your information on SAT pattern. But other two parts which have been specifically mentioned are grammatical and vocabulary. So we need to prepare about the SAT pattern, about the grammar and the vocabulary. So far, are we on the same page? क्या हम इन तीन चीज़ों को assess कर पाए? Can you confirm that, please? Okay. So I want you to answer me very quickly, guys. For vocabulary, how many of you have tried to memorize vocabulary with the help of a list? एक पेपर हाथ में आपने पकड़ा और पेपर लेके आपने उसको याद करना शुरू किया, and then you keep memorizing, and when you get to like 100 plus words, you start forgetting the last ones. आपको अगले words याद होना शुरू होते हैं और पिछले words भूलना शुरू हो जाते हैं. ऐसा होता है? Or is it just me? बिल्कुल ऐसा ही होता है. तो इसके लिए ना मैं थोड़ी सी आपको एक टूल देने लगा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल देने लगा हूँ. This tool will help you in any kind of exam. आज आपकी जो vocabulary वाले issues होंगे वो इससे काफ़ी हद तक solve हो जाएंगे, right? And have you ever heard that the best way to memorize vocabulary is that we should try to use it in our conversation. हम अपने sentences में भले लिख के भले बोल के उसको किसी ना किसी तरह we try to use that so that वो हमारी ROM से निकल के RAM की तरफ आ जाए, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि जी आपका नाम क्या है, तो यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, यू टेल द नेम राइट देन एंड देयर, बिकॉज वो आप बार बार रिपीट करते रहते हो. डज दैट हैव सम काइंड ऑफ रैशनल बिहाइंड इट? बात समझ में आती है ये? सो व्हाट वी नीड टू डू, okay, I'm waiting for your answers. Hello? Okay, yes, we should use vocabulary in the sentences, yes. So what we are trying to discover right now is a fun way of memorizing vocabulary.
जिससे हम ये वाला मामला आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, एंड देन यू विल गेट दिस डील, यू विल गेट दिस आइडिया. आप वोकेबलरी में कम अज़ कम फिर मेरी वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. यू विल बी सेल्फ सफिशेंट, यू विल बी डिपेंडेंट with this, you will be dependent on yourself with the vocabulary part. So ये जो है एक vocabulary tool है जी, इनका इसका नाम है, इस वेबसाइट का नाम है, I want you to write it down. It's called vocabulary.com. Okay? Now what's so distinguished about this website is that ये आपको कोई रटी रटाई लिस्ट या बनी बनाई लिस्ट नहीं देती है. This gives you an opportunity to choose your own vocabulary. जो vocabulary आप याद करना चाहते हैं, for example if you're a CA student, आपकी vocabulary थोड़ी सी different हो जाएगी. If you're a CSS student, your vocabulary will be a bit different. If you're preparing for this exam, your vocabulary will be a bit different. Yes? So what you can do is that you can go to this website and make an ID. For example, I have made an ID here. So you can make an ID and let me just show you that. और उसके बाद हम अपने मेन काम पर आ जाएंगे. ओके जी. सो व्हाट यू डू इज़ दैट फर्स्ट यू साइन अप. इट्स फ्री ऑफ कोर्स, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. यू sign up with a Gmail or a Facebook account, and then you can make your account here and you log in and you get to this page. All right, when you get to this page, everyone, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये वाला जो एग्ज़ाम है आपका ये MCQ बेस्ड है. दैट्स करेक्ट, राइट? सो व्हाट यू नीड टू मेमोराइज is the number of MCQs for vocabulary at least, right? So you get to this part, vocabulary list, you get to the new list, and जो vocabulary आप याद करना चाहते हैं, for example हमारे पास इस वक्त है, let's suppose इस पेपर के लिए, okay, अगर हम एक CA के स्टूडेंट होते हैं, सो हम क्या करते, हम अपनी इस vocabulary की एक वर्ड फाइल मेंटेन करते, एंड वी could have selected the words that we want to memorize, and let's suppose we can go for a whole list, we can go for 10 words. This is like according to your own pace. If you think you can handle a lot of words at the same time, you can select a lot of words, but let's set a benchmark of 15 to 10, 15 to 20 words at max. So let's say we have selected this. What you do is that you copy, you come to the website again, you paste these words here, right? Click on next step. So I've selected 26 words, right? Give it a title. Let's say we give it a title of ICAP for now. Yes? And what this website will do for you is that it will allow you to practice this in terms of flashcard. You don't have to memorize it. You can play it like a game. क्या ये बात समझ आ रही है? हमजा, सागर, अलीजा? So adhere means to fasten, right? Atrocity is barbarity. Adolescent is someone who is a juvenile. So ये ICAP vocabulary list है, right? And if you don't want to, like, these are not very difficult words. These are not very difficult words at all, right? What you can do is that you can go back, save this list already, that is done. If you even preparing for CSS, so what my observation is, as my wife has qualified CSS in 2014, and she's right now serving in the DMG group. So this is a tool which has helped both of us a lot. So what you do is that you select this list now. Give me a second. So we open this up and we have it here. Now this is basically a CSS vocabulary, all different. So we selected 10 words and we go back to our website. So click on new list.
That's also good. That's also a very good thing. All right. So just the 10 words, and you keep practicing that until you get to an understanding कि जी अब मेरे ये words grip में आ गए, and now I can practice that. Right? So nauseous is something which is not good. Abhor, can you help me out, guys? What's the meaning here? Can you go A, B, C, D? Yes, thank you. So B is the correct answer. Then we have placid. Placid is. We'll just solve 10 and then we'll move to the next part of the paper. So what's this? This is not B, guys. This is indeed C. Good job, Gopal. Serene. Counterfeit. So A, B, C or D? So people have said B, that's not the correct answer. D again I think is the correct answer. So D. Yes, hamper is to impede. Again, talisman is something which, where can you find this? A, good. And now we have done 10 words, right? There it is. Okay, so what we have done right now is that we have just selected 10 words. और आपके अब थ्रेशोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब लगता है कि जी मुझे ये 10 वर्ड्स याद हो गए. You can do it like 5 times, you can do it 10 times, you can do it 100 times. The website is free of charge. You don't have to pay anything for that. तो आप जब इसको लगे कि जी मुझे ये 10 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, what you do is that you select the next 10 and 20 and 40 and मेरे पास इस वक्त यहाँ पे कोई 1500 words हैं और alhamdulillah I was able to memorize all of these with the help of this tool. There are other tools as well, लेकिन what I like about this website is that it gives you an opportunity to play with the words, right? Yes, I will definitely share. अच्छा, इसके लिए एक drawback ये कि आपके पास इस तरह की एक word file maintain होनी चाहिए. So if you can maintain a word file, I'll share this file with you. और ये मैं यही 1500 words recommend करूँगा क्योंकि इन्हीं 1500 words कि आप let's say if you have done 1000 words only, सर 1000 words के बाद आपके CSS के words cover हो जाते हैं. I have not seen anyone, मैं ये अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को शेयर करता हूँ जो CSS करना चाह रहे हैं. तो if you have done 1000 words, आपके वो जो शुरू के 20 मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क्स में आपके निकल जाते हैं. सही है, synonyms and antonyms. So what I will recommend is that I will give you this list and I want you to memorize these one by one. Now मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसको वैसे ही बिल्कुल रट्टा मारो, लिस्ट पकड़ के याद करते रहो. Use this website, play it like a flashcard. बिल्कुल ठीक है, लेकिन don't memorize it, don't like rote learn it, try to play it like a game and then ultimately write some sentences with that. तो वो आपको बेस्ट याद हो जाएगा. ठीक है, ये हम आज थोड़ा सा वोकैबुलरी पे इस वजह से इतना टाइम लगा रहे हैं क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस वोकैबुलरी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वोकैबुलरी कोई पढ़ाने वाली चीज़ है. व्हाट डू यू थिंक गाइस? टेल मी अबाउट दैट. सही है. सो वोकैबुलरी आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी सर, ये क्लास में नहीं डिस्कस किया करेंगे. व्हाट वी विल डू इज़ दैट आई विल शेयर दिस विद यू एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज इट एट होम. नाउ लेट्स मूव टू this paper again. What we can expect from this. So give me a quick second. All right. Okay.
चलें जी, now we need to get to this part. Sir, so vocabulary part is done. This is something that we will talk about at home. Sir, ये जो grammar part है ना, this is something that we will discuss almost in every class, and then the rest of it will be sat for reading and for writing. Done है? चला, तो sat की बात है, sat के ऊपर पूछ रहे हैं, तो let's open this up. ठीक है जी, एक गाइडलाइन सिर्फ लेने के लिए. आई डोंट रिकमेंड दिस बुक. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू ओनली अंडरस्टैंड द बेसिक पैटर्न ऑफ दिस. सो लेट्स बिगिन विद द पैटर्न. सो वी हैव इंग्लिश सो फार. सो इंग्लिश में सर हमारे पास दो तरह के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द रीडिंग पार्ट. ठीक है जी, reading on the mediocre level, reading on the higher level, reading on the long passage. Then we have the writing section, जिसमें से again आपको I don't think कि ये वाला part जो है ये इतना आपके इस एग्ज़ाम के लिए relevant होगा. So what we will do is that we will start with this. Why are we starting with this? Because we need to establish the basics. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. MCQs ही होंगे. So what we want to discuss right now is that how to get rid of this, how to improve this, because this will ultimately help you in your writing, this will ultimately help you in your speaking, this will ultimately help you in your reading and getting to the higher score level. Make sense, guys? Yes or no? All right, so thank you for your answers. Let's begin with this. So if we just take a look, hierarchy of the grammar glitches. Sentence correction is something which is a favorite topic for examiners, no matter what they are doing, no matter if it's CSS, no matter if it's any exam. As long as we talk about as long as we are talking about the MCQ paper, तो ये वाला जो मामला है सर, ये कहीं ना कहीं लाजमी दिखेगा. And according to the hierarchy of grammar glitches, according to SAT, क्या जी, सबसे ऊपर क्या आती है? Verb, and then we have pronouns, and then idioms, and this and that, right? So what I want you to tell me is, firstly, right now, what is a verb, ladies and gentlemen? Let's start with the grammar part. अलीज़ा कहती हैं जी एक्शन. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. अगर सबको लगता है कि यही आंसर सही है तो बता दें मुझे. शाहजेब कहते हैं जी विच क्वालिफाइज सब्जेक्ट. ओके, ठीक है, चला. तो यहाँ से सर अंदाज़ा हो जाता है. देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस गाइज. ओके, a verb, Gopal, देखें, a verb is a word that tells us about a subject. What if I say the subject is happy? Happy बता रहा ना subject के बारे में, but subject right now it's not a verb, it's an adjective. Yes, makes sense, Gopal? Let me explain what I'm trying to tell you. Let's suppose we have this. ओके, ठीक है, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया. सो मेजॉरिटी, एक दो लोगों ने सही जवाब दिया. फराज ने, ठीक है, फराज आई थिंक इज़ बेटर. लेकिन अक्सर लोगों ने कहा है कि जी दिस इज़ एन एक्शन. एंड दैट्स वेयर, आई एम सॉरी टू से गाइज, दैट्स वेयर यू, मोस्ट ऑफ यू आर रॉन्ग. हाउ सो? बचपन से तो यही देखा यार कि एक्शन होता है वर्ब. तो लेट मी आस्क यू अ सिंपल डेल अगेन. Now I've taken you answers. Now focus on this. Okay, मैंने आप सबका आंसर लिया और मुझे बहुत कम लोगों ने सही आंसर दिया. Majority of them think that this is just a verb. तो मेरा एक सिंपल सी एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ जी. I speak English. Can you help me identify the verb in this sentence?
स्पीक है जी, बिल्कुल सही है, नो रॉकेट साइंस हियर, दिस इज द एक्शन, दिस इज द वर्ब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ आई से नाउ, हेल्प मी आउट गाइस, व्हाट इफ आई से आई एम अ पाकिस्तानी, वेयर इज द वर्ब नाउ? ओके ठीक है, अब मैं फिर से एक बात पूछ रहा हूँ सर, आपने मुझे कहा कि वर्ब एक एक्शन होता है, लेकिन यहाँ तो इस सेंटेंस तक तो आपकी बात ठीक है, इस सेंटेंस तक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट व्हेन वी कम हियर योर डेफिनेशन फॉल्स अपार्ट। सो ये बात पहले नहीं बताई थी आप लोगों ने, ठीक है जी। ओके, so what I'm trying to say is that first step of for the test, whenever you're answering the question, do not rush to the answers, right? और इस वजह से अगर यही आपका टोटल पेपर होता तो you have scored 0. Majority of us have failed because we rushed to the answer and we just had to tell that. So now let's get to the right word, let's get to the right definition. So I'm asking you again, is verb just an action? Yes or no? No, definitely not, definitely not. So it is an action or a state. Yes? अच्छा, इस पे भी emphasis किस पे है? इस और के ऊपर, ये याद रखिएगा, ये and भी नहीं हो सकता साथ में, या तो वो action होगा या वो state होगा। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ I speak English, that is your action, have a seat. But when I say I am speaking English, so right now here we have am as the helping verb and speaking becomes the, जी सर आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, बेसिक्स तो क्लियर करें पहले, ठीक हो गया। सो हियर दिस वन इज द हेल्पिंग वर्ब एंड देन दिस वन हियर इज द मेन वर्ब, राइट? No, this is not gerund actually. Right now it's not a gerund. Okay. I like speaking English is the gerund right now. Okay? Give me a moment guys. Give me just a quick moment. हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आप बुला देंगे किसी को या मैं कॉल करता हूँ? रुकें 2 सेकंड दीजिएगा मुझे। Okay जी, sorry for that. Okay, so I like speaking English. Here speaking has become a gerund and like is the main verb. कहने की बात ये है, मतलब ये है मेरे बच्चों कि हम सेंटेंस ये भी बनाते हैं, हम सेंटेंस ये भी बनाते हैं एंड हम ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। I'm coming to that. ज़मीर बस give me 5 minutes. I'm coming to that. ठीक है जी, कि मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसके फ़ौरन बाद बताने वाला हूँ, ठीक है? तो मुझे बताएं कि यहाँ पर एक्शन वर्ड या स्टेट वर्ब, दिस वन, इज इट एन एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू थिंक अ वर्ब इज? एक्शन। यही वाली बात अभी यहाँ पे चल रही है। मैंने आपसे कहा जी एक्शन है, तो मैंने आपसे कहा वर्ब क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू सेड दैट इट्स एन एक्शन। तो मैंने कहा जी इस सेंटेंस में कैन यू आइडेंटिफाई, गाइज आई एम जस्ट ब्रिंगिंग वन स्टूडेंट टू द सेम पेज। तो इस सेंटेंस में हमारे पास स्पीक इज द एक्शन, बिल्कुल सही है, लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन है
वर्ब है लेकिन वो एक्शन नहीं है। तो हमने क्या सीखा 12 साल 15 साल की एजुकेशन में कि वर्ब इज़ एन एक्शन, विच इज़ राइट और रॉन्ग? Exactly. So verb is not just an action, it is an action or it is a state. So verb की दोनों शक्लें दिखेंगी हमें, right? So what I'm trying to point out here is that the basics need to be handled, right? और फिर हम यहाँ पे आए थे। मुझे बताएं बेटा, what's your name? सुम्बल। सुम्बल, मुझे बताएंगे ये एक्शन वर्ड है या स्टेट वर्ड है? have, I have a car, this one, this right here, this is a state verb, right? बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हमारे पास what about this guys? I want you to tell me. This is I have bought a car में have क्या चीज़ है? अब एक्शन वर्ड वर्ब है, स्टेट वर्ब है या कुछ और है? Bought is a verb. But it's a Guys, talk to me. It's a helping verb. Thank you. Now it's a helping verb. तो शक्ल change कर सकता है. That's what I'm trying to tell you. And here the main verb is bought. Yes? But in the last sentence, we have as the helping verb and had as the main verb. As the main verb, but it is right now a state verb. So, ये यहाँ तक लाया मैं क्यों आपको मेरे बच्चों? I want you to get this. कोई भी एक बुक उठाएंगे एंड उस बुक में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि दिस इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड दिस विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू एक्चुअली सॉल्व इट। नॉट नाउ, टेक अ लुक गाइस। सो हम आए एक्सरसाइज नंबर 7 पे। तो हमने देखा कि वर्ब क्या होती है बच्चों? वर्ब इज़ अ स्टेट एज वेल एज एन एक्शन। सो जब मैं बोलता हूँ the flat is clean, I'm talking about an action or a state? When I say the room is clean, am I talking about an action or a state? Talk to me guys. I'm sharing this book, that's why I was telling you about this book. Ji, right now this room is clean. Am I cleaning the room? No, I'm not doing any action. That's what I'm trying to tell you. I'm telling you about the situation of the room. I'm telling you about the state of the room. Yes or no? Yes? So this sentence does not contain any kind of action. The glass is on the table. कोई एक्शन है? नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि अगर हम सिर्फ एक्शन बोलते हैं तो हम तो अपनी आधी इंग्लिश गायब कर चुके हैं। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? If by just saying state, we have eliminated our half of our English. So ये काम अब वर्ब से मैंने स्टार्ट किया ना। एग्ज़ाम में जो वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना सर, सबसे मज़ेदार सबसे अच्छे वो होते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। किसको पता है सर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। व्हाट आई एम आस्किंग यू राइट नाउ इज दिस। बच्चों बताइएगा मुझे प्लीज़। मैं कह रहा हूँ जी अली स्पीक होगा या अली स्पीक्स होगा? दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरी एग्जामिनर। यस सर, अली एंड अहमद स्पीक होगा या स्पीक्स होना चाहिए? स्पीक होना चाहिए। दिस विल बी रिमूव्ड, राइट सर। सिमिलरली आइदर, forgive me for the lack of punctuation right now, but you know, going with the flow, either Ali or Ahmad. Sir, now what should we do? Speak or speaks? Speaks again. So this is what I'm trying to tell you. Verb को हम लोग ने लेके चलना है सर, ठीक है। आज के बल्कि आने वाले 2-3 लेसन्स जो हैं वो वर्ब से रिलेटेड होंगे, और डायरेक्ट मैं आपको सैट पे नहीं चलाऊंगा, मैं सैट से थोड़ी सी आसान कराऊंगा आपको रीडिंग। डज दैट मेक सेंस? और फिर हम उसको बिल्डअप करेंगे ग्रेजुअली। बताएं मुझे, यस और नो, डू यू अग्री विद द प्लान और नॉट? Agreed, sir. Thank you. All right. Just have faith in Allah and then in me and then yourself, and everything will be fine and dandy. All right. So coming back to what? Coming back to, sorry, too many books. Yes. So coming back to this book. So
So what we are doing is we are going to page number 128 और हम कुछ एग्ज़ाम्स कुछ क्वेश्चंस को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे. And this is just very few a sample and I'll give you a lot more. देखिएगा जी. So 128 right now. Hierarchy of grammar glitches. ठीक है जी. So सबसे टॉप पे हमारे पास क्या? Verb. Okay. सर वर्ब का मतलब है कि हम कभी कभार रॉन्ग टेंस इंसर्ट कर देते हैं, हम कभी कभार रॉन्ग फॉर्म. आई डोंट थिंक कि आप लोग को फॉर्म्स के मसले होंगे. एक जो बंदा CSS अटेम्प्ट करने शुरू होता है या कोई भी फेडरल या प्रोविंशियल लेवल का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता है, आई डोंट थिंक उसके पास फॉर्म्स की मसले मसाइल होंगे. सो ये सर हमारे पास कुछ मामलात होंगे और राइटिंग में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टेंस के यूजेज को. दैट्स इट. बिकॉज आई थिंक वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको मुझसे अच्छा आता होगा, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ टेंस के यूजेज को डिस्कस करेंगे एंड देन वील मूव ऑन एंड द रेस्ट विल बी योर होमवर्क, राइट? चलें जी. सो टेक अ लुक एट दिस वन गाइज. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने लगा हूँ. आपने कुछ क्या करना है जी, टेंस सही है, फॉर्म सही है, अग्री कर रही है सब्जेक्ट के साथ, ये सब बाद में, लेकिन अभी आई वॉन्ट यू टू चेक दिस आउट. लेट्स सॉल्व 5 क्वेश्चंस एंड देन जी सर. Using your ability to isolate the verb and subject of the sentence, circle the verb error in each of the following sentences. Then write the correct form of the verb on the line provided. Detailed answers explanation follows. तो वो बाद में देखेंगे जी. सबसे पहले हम आसान वाला देखते हैं जी. तो नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं. Before the Jensens, can you see it? या zoom करूँ थोड़ा सा? Okay. Before the Jensens left the lakeside cabin, they take a roll of group photos capturing the natural beauty of this idyllic setting. क्या गलत है सर? They take is definitely wrong. तो हमें यहाँ पे किस चीज़ को टारगेट किया सर? वर्ब की फॉर्म को, वर्ब के टेंस को. फॉर्म बोलें, टेंस बोलें, बात एक ही नहीं है. Talk to me guys. Sir, before the Jensens left the lakeside cabin, they had taken. ये present tense बिल्कुल नहीं होना चाहिए, right? Can we agree on that? All right. सही है जी, पास्ट होना चाहिए सर. आगे बढ़ते हैं. Around the circus ring walks Miranda and her majestic white horses. Number 1. Where is the mistake here? Around the circus ring walks Miranda and her majestic white horses. एंड ये भी बता दूं, ये वर्ब का ही प्रॉब्लम है. तो वॉक आना चाहिए, वॉक आना चाहिए जी. वॉक्स बाबर गलत है या सही आंसर बता रहे हैं आप? सो क्या आना चाहिए? वॉक आना चाहिए. क्यों आना चाहिए? बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और इज इट प्लूरल? बिल्कुल सही है. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी हैव टू यूज अ प्लूरल वर्ब. यानी अच्छा, ये भी एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर नाउन प्लूरल होगी तो उसमें एस दिखेगा, अगर वर्ब प्लूरल होगी तो उसमें एस नहीं दिखेगा, राइट? ओके. सो अराउंड द सर्कस रिंग वॉक होना चाहिए जी. अकॉर्डिंग टू द बैंड लीडर, neither the outdoor cafe nor the amphitheaters located outside the strip mall provides a good spot for the band to make its community debut. जी सर. ओके. प्रोवाइड्स को चेंज करेंगे सर. क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे. क्यों करेंगे?
दैट्स द रूल दैट वी शुड नो, यही बताना मेरा काम है। तो बताएं जी क्यों? प्लूरल तो है, लेकिन अब सब्जेक्ट है हमारे पास दो। बिल्कुल सही है कामरान, वेरी गुड। सब्जेक्ट है हमारे पास दो। पहला सब्जेक्ट जी आउटडोर कैफे, एंड द सेकेंड वन इज एम्फी थिएटर्स। सो व्हाट वी विल डू इज दैट जो वर्ब के करीब होगा हम उसको अग्री कराएंगे सर, ऐसी है। चलो let's talk about that later. The snowman wearing a boldly striped hat and purple fleece gloves that stick out on his sides add a whimsical addition to the backyard. सर देखते हैं नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है ना, डोंट वरी जुल्फ़िकार। ये बताएं जी। सर द स्नोमैन वेयरिंग अ boldly stripped hat and ठीक है जी। सर एड की जगह क्या करेंगे? टॉक टू मी गाइस। एड की जगह हो जाएगा एड्स, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है भाई? सब्जेक्ट सिंगुलर है सर, सब्जेक्ट स्नोमैन है। वो जो ऊपर नीचे इतनी बातें बताई ना, ये वो बोल्डली स्ट्रिप्ड हार्ट एंड पर्पल फ्ली, दिस इज जस्ट these are just dodging words by the examiner. And the last one, the purpose of the annual career night is illustrating the many professions that high school students may one day choose. किधर है जी हम? Nope, that's not the answer. Remember we are solving the verbs only. अभी तो isolated है ना, अभी सब mix होके नहीं आया। Thank you Kamran. So the purpose of the annual career night is to illustrate. Yes, तो हमने gerund हटा के infinitive यहाँ पे supply करना था, right? Make sense? Let's take a look at the explanations of this. So पहला है जी subject verb agreement error, should be walk to agree with the plural subject जो थे Marinda and horses, which was excellently located by you. Subject verb agreement, what makes this especially hard is that the two subjects are linked by correlative conjunctions. Correlative conjunctions are also called pair conjunctions. In this case, the verb agrees with the latter subject, should be provided to the should be provided to agree with amphitheaters. What makes this question even more difficult is that the subject and the verb are interrupted by the phrase located outside. तो बीच में again dodging words हैं, dodging phrases हैं. Don't worry about that. जो verb के करीब होगा हम उसको agree करा देंगे. Okay जी सर, बिल्कुल मैं आप ही के लिए सारी PDFs लेके आया हूँ ना, डोंट वरी, I'll share these with you. सर फिर आया जी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या था? शुड बी एड्स बिकॉज स्नोमैन वाज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। नंबर 4 वाज जो अभी हमने देखा जेरेंड हमने लगाई हुई थी और इन्फिनिटिव उसको यूज़ करना था उसकी जगह पे। एंड नंबर 5 इज़ वर्ब टेंस एरर। हमने क्या किया? शुड बी द पास्ट टेंस टुक which is indicated by the introductory adverbial clause before the Jensen's। तो बिफोर लगाने की वजह से हम इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं लेके जा सकते थे। ठीक है जी, अगर बिफोर नहीं होता तो पास्ट परफेक्ट वुड आल्सो हैव बीन सूटेबल। शुड वी मूव ऑन गाइज? वही डिस्कस करना है, वही डिस्कस कर लेंगे एंड वील बी डन विद दैट, राइट? ओके जी, वी शुड मूव ऑन। अच्छा जी, नमाज ब्रेक की बजाय यार अगर मैं आप लोग को अर्ली ऑफ दे दूं थोड़ा सा, तो विल दैट वर्क? क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो आई थिंक वील बी एबल टू मैनेज दैट। ओके, टेक अ लुक गाइज। अब हमने करनी है थोड़ी सी रीडिंग। तो रीडिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज करेंगे, बट वी विल डू दैट अ लिटिल लेटर। फर्स्ट आई वांट यू टू check where do we stand. Okay,
Okay, sir. ठीक है, I'll leave. I'll give you an early off for that. Okay. So मेरे बच्चों, take a look. सर, आपको मतलब क्या लगता है कि रीडिंग में कहाँ पर हैं हम लोग? Like, are you a good reader? Are you a like better, above average reader? What do you think? Moderate, average. All right. ओके तो एक असेसमेंट ले लेते हैं छोटी सी पहले, ठीक है? सो ये है जी आइल्स। आइल्स में भी रीडिंग होती है, कैम्ब्रिज है, गुड ऑथेंटिक रिसोर्स। अच्छा, यूजुअली कहा जाता है और ऐसा सच भी है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ आइल्स, राइट? एकेडमिक आइल्स एंड जनरल आइल्स। फॉर्चुनेट फॉर यू गाइज दैट आई ऑल्सो टीच दिस, सो आई विल बी एबल टू यूज दिस मटीरियल एज वेल। रीडिंग ही है सर, वो सैट की हो, जीआरई की हो, सीएसएस की हो, आइल्स की हो, द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ ऑलमोस्ट द सेम बैचलर्स के लेवल पे, राइट? सो वील स्टार्ट विद एन ईजी टेस्ट, राइट? What I want you to do, the objective is to solve these answers as quickly as you can and as accurately as you can. ठीक है? ठीक है जी, तो मैं आपको कह रहा हूँ सर कि इस क्वेश्चन की ज़रा पिक्चर ले लें। 7 क्वेश्चंस हैं जो हमने करना, और इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। दैट्स अ गुड पार्ट, राइट? इफ़ यू थिंक दैट दिस इंफॉर्मेशन अग्रीज विद द पैसेज, मार्क ट्रू, सॉरी। इफ़ यू थिंक दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लाइक it does not go with the original passage, then mark false. And if you think कि इसी तरह की कोई बात है ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे जी? नॉट गिवन लिखेंगे, ठीक है? इट्स अ वेरी वेरी इजी पैसेज। हम लोग यहाँ पे इसको 3 मिनट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है? मैं आपको दे रहा हूँ सर इसको सॉल्व करने के लिए 7 मिनट, बल्कि अभी टाइम भी नहीं करते, मैं सिर्फ स्टॉप वॉच लगा रहा हूँ, और जब मेरे पास आ जाएगा लेट्स से 3, बल्कि लेट्स से व्हेन वी हैव 5 स्टूडेंट्स रिजल्ट कि 5 लोगों ने बोल दिया कि जी हमने कर लिया, देन वील चेक द आंसर्स, राइट? जस्ट वांट टू चेक द टाइमिंग कि आप कितनी जल्दी ये कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टॉप वॉच राइट नाउ एंड आई एम पैसेज शो कर। पिक्चर ले लिए सर आपने? इसकी पिक्चर लेना और आई एम शोइंग यू द पैसेज। Do let me know when you have taken the picture, please. Okay, done. Ready? Chalo ji. So the timer starts now, and here is your passage. अच्छा, आंसर्स आपके क्रोनोलॉजिकली ही आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहले होगा और उसके नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। So do let me know when you want me to move the screen up or down. Remember, I'm waiting for the first 5 students.
And please remember that it's not just about doing it quickly, it's doing it accurately. That's what matters. Zamir, for that you will have to use another phone probably. अच्छा, इसलिए एक और बात यार, आइंदा अगर कोशिश करें इन द नेक्स्ट क्लास ट्राई टू टेक द क्लास ऑन अ लैपटॉप रादर देन अ फ़ोन, ताकि आप लोग ज़्यादा फंक्शनल उसको अप्रोच कर सकें. Okay. Scrolling down. Okay, further. That's it, guys. That's the last of it. That's the end of this. Okay, done. I have the first candidate, Sana. 5 minutes. Sana, can you please mark it down? Kamran, don't reveal the answers, please. Not to everyone. I have 2 students who have done it. Okay, Sana has already mentioned 3. Shazeb, Khalik is done. Babar is done and Del is done. So 5 students, guys. And the time, the average time of the class would be ठीक है जी. So this is done under 5 minutes 36 seconds. Miss, how many done? 5. ठीक है. अच्छा, मेन चीज़ है सर कि एक्यूरेसी भी चाहिए थी मुझे. तो अगर हमने सारे सही किए हैं तो ठीक है. But if we have made some mistakes, then it's a whole different story. Alright, take a look at this, guys. Answers. So, कामरान साहब ने भेजे में मैसेज अपने आंसर्स, सॉरी, और आई वांट एवरीवन एल्स टू जस्ट गो थ्रू दिस. So these are your first 7 tests, first 7 answers. Check it out, people. तो कामरान फॉल्स, दूसरा गलत है कामरान भाई, तीसरा है फॉल्स, वो भी गलत हो गया, चौथा है ट्रू, पांचवा है फॉल्स,
Chhata is false and 7th is true. So how many did you get correctly? Is there anyone who got like 7 out of 7? That's what I'm saying. So Kamran bhai, आपके कितने हो गए सही? 3 or what? 4? 3. 5 out of 7, sir. 4 out of 7. And do you think this was a very difficult paper? The information was easy to find? Yes? Sir, एक करते हैं थोड़ा सा मुश्किल वाला. Are we up for it? हो जाएगी, हिम्मत है? बोर तो नहीं हो गए पढ़ के ज़्यादा? बताएं बच्चों, एक टेस्ट और करें, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा बढ़ा के लेवल. चलें जी, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करते हैं सर. ये होता है आपका एकेडमिक टेस्ट. ठीक है जी, एकेडमिक टेस्ट की थोड़ी सी मतलब यू कैन सी दैट द साइज इज अ बिट लार्जर देन व्हाट वी डिड. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज दैट दिस इज द फर्स्ट टेस्ट. सिमिलरली टेक अ पिक्चर ऑफ द क्वेश्चंस और मुझे दे दें सर आप पहले 9 क्वेश्चंस का आंसर. टेक अ पिक्चर गाइस. अच्छा, आप कुछ एक पैसेज पढ़ने लगे और उस हर एक पैसेज में एक होगी एक हेडिंग लगी हुई होगी. राइट, देयर विल बी अ हेडिंग विद एवरी. नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके. दिस इज़ जस्ट एन असेसमेंट. दिस इज़ जस्ट एन असेसमेंट. हमने कुछ नहीं पढ़ाया आज, हम देख रहे हैं कि हम एक्चुअली हैं कहाँ. राइट. So what you will see is that you will have a passage और हर पैसेज हर पैराग्राफ के ऊपर एक हेडिंग होगी. ठीक है. और आपने क्या करना है कि अगर ये let's suppose examples of wildlife other than bats which do not rely on vision to navigate by, ये एग्जाम्पल आपको कहाँ मिली है सर? उस पैराग्राफ की हेडिंग आपने आगे डाल देनी है नंबर 1 के. राइट. एंड सर यहाँ पे आपने इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. सर ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज समथिंग व्हाट अपीयर्स इन सैट एज वेल. ठीक है. सो इसकी पिक्चर लें बच्चों. वंस अगेन लेट मी जूम इट फॉर यू. मिस सुंबल राइट, इसकी पिक्चर रियली दिख रहा है उसका? ओके, चला, दैट्स ब्रिलियंट. सर हियर इज योर पैसेज, मुझे बताइएगा. और here is the time sir. Again I want you to go for accuracy, not just speed. Let's begin sir. जी सर, ना बोलें. जूम करना. ओके, sorry for that. पिक्चर लें जी पहले क्वेश्चंस की. 1 to 5. 1 to 5 जब डन हो जाए तो मुझे सेपरेटली ले लें, भले 2 पिक्चर्स ले लें, कोई इशू नहीं है. ठीक. और अब लें 6 to 9. आपने सिर्फ एक वर्ड सप्लाई करना है यहाँ पे. डन? एवरीवन डन? शुड वी गो टू द पैसेज? 6 to 9 में हमने पैसेज देखना है. दिस इज़ लाइक अ समरी ऑफ द ओरिजिनल पैसेज. तो आपको लगेगा जहाँ पे जो वर्ड फिट हो, यहाँ पे दिस इज़ लाइक अ शॉर्ट पैसेज. राइट. सो शॉर्ट पैसेज कंप्लीशन. सो यू विल हैव टू कंप्लीट द वर्ड. इस पर एक टेक्निक हम लोग आज ही देखेंगे. उस टेक्निक को कहते हैं फिल द वर्ड, लाइक फिल योर ओन वर्ड इन दैट. जो आपको लगे कि यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता है कि यहाँ पे और कुछ है नहीं है, यहाँ एक नाउन आनी चाहिए या एक एडजेक्टिव आना चाहिए, बल्कि नाउन के ज़्यादा चांसेस है बिकॉज एक आर्टिकल लगा हुआ है. राइट. ओके, चलें जी. रेडी सर? हियर वी गो. स्टार्टेड द टाइमर एंड पैसेज. दिस इज़ अ लॉन्ग पैसेज सर.
Do let me know when you want to scroll down. So do we have any heading that agrees with, do we have any question that agrees with paragraph A or not? Okay. Try to use this technique. As you read a passage, go back to your questions and then देखें कि यहाँ कहीं click हो रहा है, किसी से match हो रहा है या नहीं हो रहा. Should we move to the next paragraph? Okay, let's move a little. Moving to paragraph B now. Scrolling down, और मैं थोड़ा सा आपको जी ओके. सो लास्ट पूरा पैराग्राफ हमने 5 मिनट में सॉल्व कर लिया था सर, और वो टाइम गुजर चुका. 5:33. वी हैव 5:33 राइट नाउ. When you want to move to the next paragraph, do let me know.
Yes, that's a possibility, but right now for us, we are just doing an assessment. Okay? मतलब मुझे समझ तो आया कि तुम्हें ये वाला भेजना है या वो वाला भेजना है. Do you understand the point? ठीक हो गया. चलें, just give me first 5 answers if you have them. Whenever you have first 5 answers, do let me know. The rule is still the same. First 5 people to give me first 5 answers, we will stop the reading part right then and there. Adam, should we move to D? We have crossed 8 minutes. Scrolling down. Are we done with E, everyone? All right. So I think that's it. Do we have the answers to answers of 1 to 5? I'm looking for 5 affirmative answers, people. Do we have answers of 1 to 5? Okay, people are not responding. I think they have solved it. Talk to me, guys. Are we done with 5 questions? Done. Okay, Sana says she's done. I'm looking for 4 more people. Syed is also done. 2. Who's the third one? Faraz. And 2 more to go, sir. Alright.
Faizan, and last but not the least is Del. I would love to know your name. ओके जी, चलो तो हम आए अपने आंसर्स को देखने की तरफ। अगेन एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पीड। सर मैंने ये रोका 11:22 पे, सो वी टुक डबल द टाइम, हाँ, एंड सॉल्व लेसर द क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो हमने क्या किया जी, वी डिड दिस। Here are your answers. Tell me how many did you get correct? यार A and B तो नहीं हो सकता ना, एक ही होगा सर। अगर A and B दोनों हैं तो वो फिर गलत है, और चौथे में तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। So how many of you got 5 out of 5? Miss? Out of 5. That's a good total. Still a good total. 60%. जी anyone 5 out of 5? 3 out of 5। तो बेस्ट हमारा आ रहा है जी 3 out of 5 अभी तक। ठीक है, चलें लास्ट काम करते हैं, लास्ट बात करते हैं सर। दिस वी विल डू। फर्स्ट वन वाज B plus C। कांट बी B plus C, ना, इट कांट बी लाइक 2 paragraphs। ठीक है, 4 out of 5 इज ऑल्सो गुड। ओके, चलें व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ, सी देखें, अगर हम सबसे पहले वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं काम मेरे बच्चों, अगर हम सबसे पहले वर्ब से काम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, जो इंशाल्लाह कल ही होगी, आई वांट यू टू गेट डन विद योर बेसिक वर्ब्स विच मीन्स टेंसेस। आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। आई वांट यू टू गेट डन विद ऑल द टेंसेस दैट यू नो ऑफ। यस, टेक अ लुक। सर इस बुक का नाम है, इस बुक को हम लोग यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, एंड द राइटर इज़, जी आते हैं सर, आते हैं सर दिस इज़ ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। दिस इज़ रिटन बाय जॉन ईस्टवुड। यू कैन डाउनलोड इट वेरी ईजिली। इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। नहीं मिलेगी तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल शेयर द PDF विद यू। और मैं सर ये पोर्शन कवर करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। देखें, जब हम वर्ब्स की बात करते हैं ना मेरे बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब्स, सॉरी फॉर दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब्स, तो वर्ब्स का मतलब होता है सारे के सारे टेंसेस। लाइक दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू नो, राइट। तो ये हमने नेक्स्ट क्लास में पूरी कितनी सर, कोई 33 एक्सरसाइजेज कंप्लीट करनी है इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला काफ़ी ज़्यादा, एंड मुकाबले का इम्तहान ही देने जा रहे हैं हम लोग, राइट। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ दैट गेट डन विद दीज, और फिर हम लोग आगे देखेंगे। सर वर्ब्स का मतलब आपके मॉडल वर्ब्स भी हो जाता है, वर्ब्स का मतलब आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आ जाता है सर। सो और कुछ नहीं करें, आपका वॉइसेस यहाँ पे आ जाएंगी, और कुछ करें नहीं करें सर। व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ दैट, ये देखें यहाँ पर सर एग्रीमेंट भी आ जाता है, ये सब कुछ वर्ब्स के अंदर आ जाता है, पॉजिटिव वर्ब्स भी आ जाती हैं, एग्जैक्टली। सो और कुछ नहीं सर, कल मुझे आई वांट यू टू बी डन विद योर टेंसेस एटलीस्ट, ठीक है। और टेंसेस डन होने का मतलब ये नहीं है कि कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, मुझे उसके यूजेज चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सा टेंस यूज़ होना चाहिए। वाई डू वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, हम बोलते हैं ना, आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग 3 cars, इज दिस राइट और रॉन्ग? Yeah, my brother is having 3 cars. Is that right or wrong? That's horribly wrong, yeah, because having is like temporary, it shows I'm having lunch, right? So my brother is having 3 cars. How hungry is your brother that he's eating 3 cars at the same time? So what I want you to do is that get done with this, and then we will start this tomorrow, sir. PDF सर मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, इसको सर हम आज नमाज के लिए जल्दी ऑफ कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई आपके लिए कोई सवाल जो बताना चाहें, जो बात शेयर करना चाहें, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हमने आज क्या किया, हमने थोड़ा सा रीडिंग की असेसमेंट ली अपनी, हम एवरेज 3 out of 5 पे स्टैंड कर रहे हैं, सो वी लाइक एवरेज अबव एवरेज, राइट।
हमने वर्ब की डेफिनेशन देखी है. व्हाट इज अ वर्ब? एक्शन और अ स्टेट, दोनों साथ में नहीं हो सकता. इट इज़ एन एक्शन और अ स्टेट. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द सैट पैटर्न अ लिटिल, कि पेपर आपका किस पैटर्न पे आएगा जी. पेपर में थोड़ी सी रीडिंग क्वेश्चंस होंगे, पेपर में कुछ ग्रामर क्वेश्चंस होंगे, पेपर में कुछ आपके राइटिंग क्वेश्चंस होंगे, बट ऑल ऑफ देम विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ MCQs. यार अतर इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे. बात थोड़ी सी लंबी और अभी 10 मिनट बचे हैं सिर्फ. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज़. ख्याल रखिएगा बहुत सारा. और इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दैट हैज़ कम योर वे, एंड मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस. अल्लाह आपको कामयाब करे और आप इंशाल्लाह किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचे सर. आमीन. अल्लाह हाफिज़. जी 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 जी. ये इतनी बुक्स का वो तभी तो लेके आए. मतलब आज देखें, आज हमने आइल्स को थोड़ा सा खोला, आज हमने सार्ट को थोड़ा सा खोला, आज हमने जॉन ईस्टवुड साहब को थोड़ा सा खोला. तो आपने कभी CSS या PMS का कोई एग्ज़ाम होता है ना, तो रेकमेंडेड बुक्स देते हैं, राइट. और हर पेपर के बाद उनकी कुछ 16-17 किताबों की लाइन लगी हुई होती है. यू मस्ट हैव सीन दैट, राइट. हम लोग 16-17 तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हर बुक से बेस्ट उठा लेंगे कुछ ना कुछ, राइट. चलो ठीक है. आप फिजिकली लेना चाहेंगे क्लासेस? ओके, ऑलराइट, ठीक है.